Dear students of class 6, good morning. I am Ajit Kumar Shukla. Today I want to teach you what is LCM. LCM means least common multiple. Please see it. LCM of 2 or more than 2 numbers is the least number which is divided exactly by the given numbers. For example, LCM of numbers 18, 24 and 36 is 72. Clarification. Here 72 is the least multiple of 18, 24 and 36, which is exactly divisible by given these numbers. So 72 is the LCM of 24, 36 and 18. Here some methods of finding LCM. LCM by prime factorization method. Finding the LCM by prime factorization method. Please see an example. Find the LCM of 90, 108 and 144 by prime factorization method. Please see its solution. Resolve each numbers into prime factors. C as 90 is factorized as 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5 से again divide करें 1. So here prime factorization of 90 is 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 5. Similarly, we can factorize 108 and 144. This can be written as the prime factorization of 90, 108 and 144 can be written as 90 is equal to 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 5. 108 can be written as 3 multiplied 3 multiplied 3. 108 can be written as 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3, and 144 can be written as 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3. Here LCM is equal to LCM राइट करने के लिए हर प्राइम फैक्टर्स का जो मैक्सिमम पावर है उसको यहाँ राइट कर देते हैं. राइट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मीन्स product of maximum power of all the factors. 2 का मैक्सिमम 2 4 टाइम्स मैक्सिमम आया है, सो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स मैक्सिमम आया है, 3 मल्टीप्लाइड 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 केवल 1 टाइम आया है. ठीक है, सो 5 पावर 1. वी कैन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. 2 पावर 4 कैन बी रिटन एज 16, 3 पावर 3 can be written as 27 and 5 power 1 equal to 5. So we get answer by multiplying 16 multiplied 27 multiplied 5, that is equal to 2160. So LCM of 90, 108 and 144 is equal to 2160. Okay, now see second method, finding the LCM by the division method. डिवीजन मेथड से किस तरह से हम लोग LCM फाइंड करते हैं. प्लीज सी इट. फाइंड द LCM ऑफ 96, 108 and 180 by short division method. Please see it. We can write the above numbers in the given table form. 96, 108, 180. अब इसको सबसे पहले छोटे छोटे नंबर से हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे. पहले 2 से डिवाइड किया, 96 का 48 हो गया क्वोशेंट, 108 का 54,
80 को डिवाइड किया तो 90 आ गया कोसेंट। फिर 2 से डिवाइड किया 24, 27, 45। अब चाहें तो फिर 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 8 जा, 3 9 जा, 3 15 जा, 3 से 8, 3 3 जा 9 and 3 5 जा 15. So LCM of the given 3 numbers 96, 108 and 180 is that is equal to 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 8 multiplied 3 multiplied 5. सब नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर आता है 4320. Hence LCM of 96, 108 and 180 is 4320. Please take homework. Complete exercise 20. Complete exercise 20. All the problems I have checked this when you come to school. Okay. Thanks, dear students.